Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Grammar Sword. My name is Kitten Ishfaq. Today our 15 lecture. Let's start our topic past tense. Past tense को उर्दू ज़ुबान में फ़ेल माजी कहते हैं. The past tense is a verb which is marked by time. The past tense is used for action in a time which has already happened. Types of past tense. There are 4 types of past: simple past, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Today I will discuss only past continuous tense in detail. Definition of past continuous tense. The past continuous tense is used to describe actions that began in the past and often continued for a short period of time after the action started. This tense describes actions or events that happened at a specific time in the past. These actions are usually no longer happening at the time this sentence is being said or written. यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसे अफ़ाल को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माजी में शुरू हो और अक्सर अमल शुरू होने के बाद मुख्तसर मुद्दत तक जारी रहे. पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. नाउ आई विल डिस्कस द रूल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. उर्दू में पहचान है यानी जिन फ़िक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए फ़ेल माजी जारी कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा दूध पी रहा था, वो सारा दिन घर में इंतज़ार करता रहा था. हमजा दूसरे दिन से घास काट रहा था. कल रात जब आप देर से घर पहुँचे तो मैं सो रही थी. इन तमाम सेंटेंसेस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस को शो करते हैं. नाउ आई विल डिस्कस द सेकंड रूल, द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब. द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग द पास्ट टेंस ऑफ टू बी, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ वाज का इस्तेमाल, जबकि आई, वो, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. द यूज़ ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing. The past continuous tense is formed by the combining the past tense with the verbs present participle with ing word. For example, waiting, sleeping, calling, sitting, drinking and listening, etc. Now I will discuss the examples of past continuous tense. The following are the basic examples of past continuous tense. The baby was drinking milk. He was waiting at home all day. Hamza was cutting the grass the other day. I was sleeping when you got home late last night. I was reading a novel. We were playing basketball. He was fighting with his friends. She was becoming a good actor. They were breaking a coconut. A man was digging a pond. You were forgetting a Facebook password. Past continuous tense is often combined with past simple tense. An example of this combination is while we were sitting at the station, the rain began. The past continuous tense is were sitting and the past simple is began. Past continuous can also be used when describing the background of a story written in the past tense. Now I will discuss the formula of past continuous tense. The past continuous tense formula is very familiar if you have already learned present continuous and simple past. Formula for affirmative sentences. सबसे पहले है subject, फिर was और were, then first form of verb के साथ ing और लास्ट में ऑब्जेक्ट. ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ was का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि आई, वो, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हम verb का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड और सेकेंड है वी वर प्लेइंग इन द ग्राउंड. टू मेक नेगेटिव स्टेटमेंट्स इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस वी यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन वाज नॉट, वर नॉट और फिर ing फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट गोइंग टू द मार्केट और सेकेंड है वी वर नॉट टॉकिंग विद माई फ्रेंड्स. Now I will discuss the interrogative tense of past continuous tense. We use the past continuous in the interrogative form to ask for situations that occurred in the past and were in progress at every moment during a period of time. When we use past continuous in its interrogative form, we start with was or were.
followed by the subject and the verb with ing and then object. The sentence ends with a question mark. For example, was he going to the market? Were we talking with my friends? Thanks for watching my full video. Please subscribe to my channel and press the bell icon. Like, comment and share. Thank you.